about yesterday, we had discussed the capital account. एक बारी फिर revisit करते और आगे चलते हैं. आप बात कर रहे थे, we were talking about changing in the asset or the liability of the country. तो जो भी आपका करंट अकाउंट का बैलेंस होता है उसमें उसकी वजह से आपका कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो सकता है. अगर आपके पास करंट अकाउंट में सरप्लस होता है तो as a country you can afford to make investments, or as a country you can afford to give loans. अगर आपका करंट चल रहा है then you cannot really make much investments in loans. Rather, you would be seeking loans. So, some is dependent upon the nature of your current account. When we're looking at components capital account, one we've spoken about borrowing and lendings. One was foreign institutional investment. Thank Foreign you. direct investment was if the foreign companies are coming in and buying their assets from India, and foreign institutional investment is like the foreign companies are investing in the stocks of Indian companies, or stocks and companies which trade in India. Taken. Thank you. Let's take it one step ahead. Now, this is purely extra, but let me just talk about it. Out of the two, many countries have a preference for foreign direct investment over foreign institutional investment. Can we think of a reason for this? हमारी कंट्री भी FDI ज़्यादा प्रमोट करती थी पहले, if I take you 10 years before this. And foreign institutional investment पे हमने ना restrictions रखे हुए थे थोड़ा. Why do you think we'll do that? पैसा तो पैसा है. Ma'am, because of the risk involved. What risk involved, Raghav? Ma'am, like the price of stock are really uncertain whether the market is going up or down, so they are not sure of the investment. All right, taken. Just adding to this, if you know, 2008 we had a global recession triggering from United States and then affecting the rest of the world. अगर आपकी कंट्री में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, मतलब लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और ऐसा रिसेशन हो जाता है, इंडिया अफेक्ट हो रहा है, रिसेशन आ रहा है और FII हमारे हाई बहुत ज़्यादा है, आपका एक फॉरेन इन्वेस्टर का पहला रिएक्शन क्या होता है रिसेशन पे? दे ट्राई टू सेल ऑफ द शेयर्स एंड टेक द मनी बैक, विच बेसिकली मीन्स ऑलरेडी रिसेशन चल रहा है, ऑलरेडी कंट्री में ऐसा लग रहा है पैसा नहीं है और आपका फॉरेनर भी अपना पैसा वापस निकाल रहा है, विच वर्सन्स द सिचुएशन. What happened in India in 2008-9 जब ये रिसेशन शुरू हुआ, we had restrictions on foreign institutional investment, मतलब इतना हमने उस टाइम अलाउ ही नहीं किया हुआ था, and we had majority of foreign direct investment. Foreign direct investment को liquidate करना इतना आसान नहीं है. किसी ने अपना पूरा प्लांट बनाया हुआ है, फैक्ट्री बनाई हुई है, प्रोडक्शन चला रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. अब आपको लगता है रिसेशन हो रहा है, वो एकदम से अपना पैसा नहीं निकाल सकता. So why did we cope up with the recession in a better manner than some other nations? Because our policies were such that it was difficult for the foreigners to take their money away. Foreign institutional investment अगर हमारा 100% उस टाइम allowed होता, that would have meant कि foreigners एकदम से अपना पैसा ले जाते, which would have worsened the situation for us. तो the policies बनाते से बहुत चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं. This was purely extra. नहीं भी समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Yeah, ma'am. Can I add a point? Please do. Yeah. So now only we were talking about 2008 financial crisis. So there's a movie called Inside Job.
It's about the 2008 financial crisis, and it's a damn good movie. I recommend everyone to watch that movie. अगर वो movie एक बार देख ली ना अच्छे से, बैंकिंग चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा कि असल में हो क्या रहा है, चक्कर क्या है, स्कैम क्या है। मतलब it's a good movie. If you get time, do you know watch that movie? It's side job. All right, will do. This is on Netflix by any. Chalo, I will find. Not an issue. All right, moving on. Third, we have change in foreign exchange reserves. Abhi change in reserves क्या है? It is basically just transaction between the Reserve Bank and the government. अगर आपके पास surplus होता है, so your Reserve Bank will be the government will give the foreign exchange to the Reserve Bank. वो government अपने से outflow दिखा देती है, hence going on the debit side. अगर गवर्नमेंट डेफिसिट रन कर रहा होता है तो वो रिजर्व बैंक से ले लेती है एंड देन इट शोज इनफ्लो कमिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक टुवर्ड्स द गवर्नमेंट शोज दैट ऑन द क्रेडिट साइड. तो अगर गवर्नमेंट विड्रॉल दिखा रही है रिजर्व से, वो पॉजिटिव साइड पे क्यों जा रहा है? विड्रॉल हो रहा है आरबीआई से, रिसीव कर रही है गवर्नमेंट, सो गोज एज अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. एंड व्हेनेवर देयर इज एनी एडिशन हैपनिंग टू द रिजर्व्स जो आपका आरबीआई होल्ड करता है, एडिशन कैसे हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट अपना फॉरेन एक्सचेंज दे रही है आरबीआई को, गोज ऑन द डेबिट साइड बिकॉज द गवर्नमेंट इज लूजिंग आउट ऑन रिजर्व्स. जनरली ये चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कब शुरू होता है? दिस इज इफ यू सी दिस इज मेयर ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू आरबीआई या आरबीआई टू गवर्नमेंट. दिस गोज एज एन एडजस्टमेंट एंट्री क्योंकि आपने बैलेंस करना है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसी को फॉर्मली ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. जब आपको बैलेंस करना होता है अपने बीओपी को, गवर्नमेंट या फिर तो आरबीआई से ले लेगी पैसा या दे देगी पैसा, so that on records you show that all of it is balanced. Goes as an official reserve transaction. इस पे फिर बात करेंगे, but for now be comfortable with this. Since we're discussing capital account, again आपका surplus हो सकता है, deficit हो सकता है या balanced हो सकता है. If it is surplus, that basically shows inflows are more than the outflow. If there's a deficit, हो सकता है that the inflows are less and the outflow is more. One thing, सोच के बताओ, a deficit in capital account, is it always a bad thing? या फिर a surplus in capital account, is it always a good thing? Ma'am, I can answer for the surplus part. A surplus in capital account is not always a good thing because it can always lead to inflation. Because country में इतना सारा पैसा है, तो prices बढ़ेंगी तो inflation will happen. Taken. Anyone else who would want to add anything to this? Once there's a surplus that one, maybe we have taken some loan or some borrowings, we have to return that. थैंक यू. सरप्लस जरूरी नहीं है कि वो मेरी इनकम है. आप अगर बोरो भी करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, उसकी वजह से भी यू कैन हैव अ सरप्लस. नाउ दैट सरप्लस इज नॉट योर इनकम, दैट्स अ लायबिलिटी. So a surplus on capital account need not always be a good thing. Similarly, a deficit on capital account need not be a bad thing. I think someone wants to say something. Yeah, ma'am, I was coming to that only कि अगर आके उससे लोन लिया है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास डेफिशिट है क्योंकि हमने या तो इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए किसी की फाइनेंशियली हेल्प की है या फिर किसी को लोन आउट किया है मनी. Taken. You can run a deficit. Even invest in some things outside India. So basically you've created an asset somehow. या फिर आपने किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया है या फिर आपने किसी को लोन दिया है. So unless we know what are the components within, I cannot always conclude कि surplus in capital account is a good thing and a deficit is a bad thing. Current account में I can do that. Current account का surplus, current account तो था ही income के सारे sources. तो अगर current account में surplus है, that's a good thing. That is our income. Current account में अगर deficit है, that is a bad thing. That basically means we've spent more and we've earned less. All right, looking at this table. Components का borrowing अगर मेरा आइटम है, सो हम लेंड कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड पे जा रहा है. सॉरी, इज इट करेक्ट? लेंडिंग टू अब्रॉड गोज ऑन क्रेडिट साइड.
No, ma'am. Ma'am, debit. No, ma'am. This goes on debit side, which also means I will have to remove this from GC and put the edited thing. Borrowing from abroad will go on the credit side क्योंकि यहाँ से पैसा आ रहा है और इसका नेट होके नेट बोरोइंग्स हो जाता है. इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, समवन टू टेल मी क्रेडिट पे कौन सा जा रहा है और डेबिट में कौन सा जा रहा है. Investment from abroad will go to the credit side and investment to abroad debit side. Are we sure? Others, can I accept this or do we disagree? Ma'am, we can accept this. Investment from abroad goes to the credit, investment to abroad goes to the debit side. All right, change in foreign exchange, decrease हो रहा है तो credit, increase हो रहा है तो debit. Net करके आपको पूरा मिल जाता है capital account का balance. Looking at the difference between the two accounts, please take a moment and read this table here. Just in case you have a question, please ask. Excuse me, ma'am. Yes, Shivam. Ma'am, what exactly is capital stock of an economy? Capital stock, you can simply look at all the final assets or liabilities that you have towards the. एक होता है capital stock, एक होता है capital formation. Capital formation हो गया the process of having the capital that you have in your country, can be any asset or a liability. तो वो physical asset भी हो सकता है, वो real asset भी हो सकता है. Physical asset will be something like an infrastructure for a country. Real asset or financial asset can be in form of, say, the loans that we've given out. और कैपिटल फॉर्मेशन होता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ से अ फिजिकल एसेट और ह्यूमन एसेट. So stock is your end result and formation is the process of forming that end result. Excuse me, ma'am. I had one other question. It's not from this topic. मैम, जो डेप्रिसिएशन हम लगाते थे ग्रॉस से नेट बनाने के लिए, तो वो डेप्रिसिएशन ये कैपिटल स्टॉक के ऊपर लगती है या कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर? For that given year हम estimate करते हैं on your capital stock, क्योंकि आपका depreciation is basically the replacement cost. तो आपका जो भी स्टॉक है उस पे आप एस्टिमेट कर, अगर मैं कहती हूँ मैं एस्टिमेट कर रही हूँ कि 10 साल की लाइफ है मेरी मशीनरी की, तो मैं 10 साल में डिवाइड, आई वुड वांट टू रिप्लेस दैट मशीनरी इन से नेक्स्ट 10 years. तो उसका इन वेरी सिंपल लैंग्वेज 1 लाख की मशीनरी है तो मैं 10,000 फॉर नेक्स्ट 10 years डेप्रिसिएशन लगाती हूँ ऑन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल स्टॉक दैट आई हैव, दैट इज माय मशीन. Is it making Okay. sense? Yeah, ma'am, I know what depreciation is, but if you're taking in the consideration the whole country, तो अब country के capital stock पे depreciation कैसे लगेगी? That's the confusing part. एस्टिमेशन बेटा, एस्टिमेट ही करते हो आप फॉर हाउएवर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग. जो भी आपका, अब जैसे मैं बोलती हूँ आपका अगर एक फ्लाईओवर है, यू विल नॉट रियली हैव अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर the entire flyover. You will not replace the flyover. You keep on maintaining the flyover. So depreciation ideally आप एक fund ही बनाते हो so that you can effectively later go on with the maintenance process of it. Goes on the value of the capital stock and not the formation of capital. Going back to your original question. Okay, ma'am, got it. All right. Then we left with the last topic, one, autonomous and accommodating items. Autonomous items कौन सी होती हैं जिनको हम अंडरटेक करते हैं विद द सोल मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो जैसे अगर हम बोल रहे हैं हमने एक्सपोर्ट किया है ऑफ सर्टेन गुड्स या एक्सपोर्ट किया है ऑफ सर्टेन सर्विसेज और यू इन्वेस्टेड इन अ सर्टेन कंट्री, जो ट्रांजैक्शंस आपने सोच के करे हैं कि मुझे इनसे प्रॉफिट मिलेगा, उनको हम ऑटोनॉमस आइटम्स बोलते हैं या फिर अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं. अबव द लाइन क्यों? क्योंकि वो
जब आप रिकॉर्ड्स बनाते हो इंडिपेंडेंट नेचर के, दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड और द कंट्री. If I here, so if I take you to the current account, हम जो export कर रहे हैं, हम जो import कर रहे हैं, वो autonomous है. What exactly is driving that decision of investment or import or export is my motive of maximizing profit. इसी का opposite हो जाता है accommodating items. Accommodating items क्या होती हैं? You are not making decisions with an independent approach. Now you're making decisions to correct certain things. Accommodate करना है, या अगर तो deficit हो गया है तो अब हमने कुछ transaction करनी है जिससे वो deficit accommodate करे, या अगर surplus हो गया है तो हमको कोई transaction करनी जिससे हम वो surplus accommodate करें. So if I say that we're running a deficit, if I'm taking a loan, I'm purely taking a loan to meet that deficit. Goes as an accommodating item. This loan was not taken for profit maximization. This loan was taken for meeting the deficit that we have. Or if I say surplus हो गया है and now I am giving out a loan, या फिर अगर मैं foreign exchange reserve RBI के बढ़ा रही हूँ, these transactions are taken to adjust the disequilibrium that is there in BOP. Those will then go as your accommodating items. Do one thing, should not be that difficult. We've already spoken about this, just given a broad name to it. Please read this and ask a question. I hope I'm not scrolling too fast. I hope you're done reading with autonomous. Now, what does this line mean on capital account receipts and repayments of long-term loans by private individuals are autonomous transactions? When you're private organization, all right, when you're talking about investments or you're talking about loans, you can look at two perspectives. या फिर तो आप private organizations का देख सकते हो, या फिर आप government induced देख सकते हो. If your private organization is taking a loan, generally happens in form of shares, जो हम foreign institutional investment की बात करते हैं. Again, it's like an investment taken with the motive of increasing the capital that you're putting in your business with intention of maximizing your profit. Whenever your private organization is involved, that's always triggered by profit, that's not triggered by welfare. So private तो कुछ भी करेगा, that is for profit. Government का आपको देखना पड़ेगा what is the purpose. Are they investing in business? Are they increasing public expenditure or are they taking a consumption loan? वहां पर आपका हमेशा you'll have to look at the purpose there. Sure, ma'am. All right. Moving on to accommodating. ये पढ़िए. Just as the name suggests, accommodating is to adjust either the deficit or the surplus. Please read and please ask a question. Done, ma'am. All right. If you see here, one second. जो ये highlighted है, the sources used to meet a deficit in BOP are foreign exchange reserves and borrowings from abroad. Borrowings from abroad तो हम बाहर से ले रहे हैं. ये foreign exchange reserves कौन देने वाला है हमको? Ma'am, RBI. Thank you. RBI gives this to us.
वो जो प्रोसेस हम बात कर रहे थे ऑफ चेंज इन रिजर्व्स, उन ट्रांजैक्शंस को हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस कह रहे हैं. सो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जहाँ लिखा हुआ है ये हमारा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस है. लुकिंग एट द डिफरेंशिएशन टेबल, अगेन मीनिंग जो आपका है ऑटोनॉमस, any transaction that they're incurring for profit maximization. Accommodating purely are those transactions that are undertaken for covering either your deficit or the surplus. इफेक्ट ऑन बीओपी पे बात करते हैं. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बीओपी. आपका बीओपी ज्यादा है या कम है, ऑटोनॉमस को फर्क नहीं पड़ता. आप इंपोर्ट फिर भी उतना ही करोगे, आप एक्सपोर्ट उतना ही करोगे, आप इन्वेस्टमेंट उतना ही करोगे. अकोमोडेटिंग को फर्क पड़ता है बीओपी का क्या स्टेटस है. बीओपी अगर सरप्लस में है तो आपकी अकोमोडेटिंग आइटम्स किसी और तरीके की होंगी, मे बी यूर लेंडिंग आउट. अगर बीओपी डेफिसिट में है तो आप बोरो करोगे. सो अकोमोडेटिंग इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर और द एंड रिजल्ट ऑफ योर बीओपी. ऑटोनॉमस थर्ड, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस दोनों अकाउंट्स में से किसी में भी हो सकती है. करंट में भी हो सकती है और कैपिटल में भी हो सकती है. अकोमोडेटिंग इज ऑलवेज ऑन कैपिटल. क्यों? क्योंकि या फिर तो आप लोन दे रहे हो या आप लोन ले रहे हो. दैट वुड मीन आपका एसेट या लाइबिलिटी नेचर चेंज हो रहा है. तो अगर कोई ट्रांजैक्शन जिससे एसेट या लाइबिलिटी चेंज हो रहा है वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी. तो अगर कोई ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में है वो बाय डिफॉल्ट ऑटोनॉमस है. कैपिटल अकाउंट में होगी तब आपको देखना पड़ेगा, वो ऑटोनॉमस हो सकती है, वो अकोमोडेटिंग भी हो सकती है. Lastly, alternate names, autonomous goes as above the line transactions, accommodating goes below the line transactions. ये line का क्या logic है? If I simply ask you people to imagine a record, आप कोई भी record maintain कर रहे हो, वो then you make a line, a formal line there, you try to close that account and there's an adjustment figure that you would want to put. आपकी accommodating items will act as that adjustment figure. Hence goes below the line because you're trying to balance your account there. Keeping that accountancy wala logic, they call autonomous above the line and accommodating below the line. Excuse me, ma'am. Hanji. Ma'am, can you please repeat that point regarding current account transactions are always autonomous? All right. Whenever we are saying that there's an accommodating item that has happened, either we are accommodating, आप कैसे करोगे? आप या फिर किसी को लोन दोगे अगर आपका सरप्लस है, या फिर अगर आपका सरप्लस है तो आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपना चेंज कर लोगे. अगर आपका डेफिसिट है तो आप लोन लोगे या आरबीआई को कहोगे कि हमें रिजर्व्स दे दो. All these transactions are changing the asset level of the country or the liability of the country. Any transaction that is changing your asset or liability by default goes in the capital account. तो आपका जो भी accommodating item होता है वो होता ही कैपिटल अकाउंट में है. अकोमोडेटिंग नेचर के आइटम कोई भी करंट अकाउंट में नहीं जाएगी. करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस जाती हैं? दैट विल डिटरमाइन द इनकम लेवल ऑफ द कंट्री. इफ आई टेक यू बैक हियर, एक सेकेंड. This is the structure of the current account. All the items that you have here, they are determining the income level of the country and are all done for maximizing the income of the country. तो आप import कर रहे हो of goods या services, export कर रहे हो of goods या services, आपको बाहर से income आ रही है या आप दे रहे हो, unilateral income आ रही है या आप दे रहे हो. All of this is determining the total income of the country, not changing the asset aspect, not changing the liability aspect. तो अगर सब कुछ आप यहाँ पे income earning के लिए कर रहे हो, all of them are autonomous. Okay, ma'am, got it. Anyone else who has a question? Can I answer any question or anything that is bothering us? कुछ और आता है ध्यान में, आप पूछेंगे please. All right. The next portion I'm highlighting, we've already spoken about this. Now they've just made it a small subtopic and written it in another fashion. Please take a moment, please read this and please ask a question.
Are we done reading? Excuse me, ma'am. हाँ जी. मैम, जो ये रिजर्व होता है फॉरेन वाला आरबीआई के पास, तो इसके ऊपर क्या आरबीआई इंटरेस्ट पे करती है गवर्नमेंट को? No, you're just a custodian. RBI may invest it, may not invest it. Generally, RBI किस चीज का इंटरेस्ट देती है? The income that they've kept, the income that the government has kept with the RBI, not for foreign exchange. They're actually holding it for the government, a favor for the government. If I take you back to the custodian thing. I got the custodian point की रिजर्व के लिए नहीं देती, बट about the income government आरबीआई के पास क्यों रखेगी? Because RBI is ideally the bank of the government. Government will not really have accounts with the commercial banks. They keep it with the central bank. So do you remember the banker to the government function, the agent, Yes, ma'am, and I do. Yes, so ma'am. it is just that. Keeping that in mind, we're looking at the function of RBI. So, ma'am, it's a little strange that why do they give interest on the income? Why not on the reserve? Like reserve भी तो आरबीआई के पास ही है. No. See, reserve you're looking at as source of income and source of expenditure for different organizations. Even a private organization export करती है और उसको foreign exchange में payment मिलता है, वो RBI अपने पास रखता है और हमें rupees करके मिलता है. If you know, people will not really keep dollars with themselves because that is not accepted as money in the domestic territory. So just one organization in the entire country is held responsible for maintaining and holding foreign exchange reserves. और सिर्फ reserve को आप income की तरह मत देखो. Also look at it, if I take you back to managed floating. अगर आपका foreign exchange का price या फिर बहुत बढ़ गया या बहुत कम हो गया, your reserve bank will have to intervene and regulate the price. So there are too many functions or need for foreign exchange, and that is not just as income of the government. जबकि अगर मैं रुपीस की बात करती हूँ, just acting as a banker, अगर गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, RBI is also using it for investment purposes, generating funds and giving interest to the government. अगर आपको ध्यान हो ना, पीछे भी एक डिबेट हुई थी that RBI had a lot of interest or income that they had generated out of government's funds, and the government wanted to withdraw that for their pandemic needs. Anyone who remembers that debate, but RBI did not want to give that interest money because the RBI claimed that that was their money that they've generated. Government wanted it because they were falling short of revenue. उधर ये डिबेट आएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट का इनकम है, फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आएगा, और उसके अलग यूजेस है. Got it, ma'am. Got it. All right. What exactly is this portion? One, they're talking about the disequilibrium. Disequilibrium क्या हो गया? Where you're discussing either a deficit or a surplus, or how exactly are they managing? Arnav, I'll come to that. Let me finish this and I will address that also. How exactly are they managing? आप change in reserves देखते हो, जिसका हम formal name देते हैं official reserve transactions. Thank you for pointing that, Arnav. We started by highlighting topics to be deleted, that is balance of payment deficit. One sad thing is official reserve transaction, जो हम changes in reserve की बात करते हैं, is an important topic. However, clearly CBSE has not written whether it's deleted or not deleted. तो अगर मैं मानती हूँ कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, जो मेरा ये लास्ट टॉपिक है, अगर ये करना है हमको, एक सेकेंड, ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस का टॉपिक है, ये इफ आई एम अज्यूमिंग इट नॉट टू बी डिलीटेड, दिस कैन ओनली बी डिस्कस्ड अगर हम डेफिसिट की बात करते हैं. Arnav, even if you take deficit to be deleted, that would just mean that this paragraph is deleted. I am sure we can manage to read one extra paragraph. Ideally, deficit is deleted.
But official reserve transactions पे इन्होंने कोई conclusion नहीं दिया हुआ है. So it will be okay to read one paragraph and then talk about official reserves. Thank you for pointing that out. I anyway had to cover that. All right. With that, we are through with the entire macro portion. When we meet tomorrow, we're left with one last lesson of Indian eco. All right, let's just have a conversation. People, I was thinking we should have regular small little assessments of macro. Do you think you'll be game for those if I post them timely? And if I make a proper schedule, do you think you'll be willing to use this as a source of revision, or do you want to have revision at your own pace and not have me around imposing? Raghav, can be MCQ. I would not want to keep MCQs. Maybe say one word reasoning. I would want to check diagrams for ADAS. तो जैसे normal वो uploading questions नहीं थे assessment में. I would also want to see your diagrammatic skills. But maybe for smaller portions. तो जैसे maybe एक दिन सिर्फ ADAS का unit करें या फिर 2-3 दिन में ADAS को spread out कर लें, फिर BOP कर लें. Something like that. थोड़ी regular practice हो जाए या revision हो जाए. Would you people want just MCQs? Ma'am, No, ma'am, that's fine. What yeah, was the question? all type of questions are good, but I think कि पहले syllabus खत्म कर लेते हैं, then वो तो पूरी वो तरह assessment पे लग जाएंगे. that is there. I will not start before I finish IED. I will have to have my own back-end preparation. So I'm just I'm just trying to understand the pulse of the class. If you will be willing, only then will I put in that much effort. Because it takes a lot of time even for me as a teacher to prepare those Google forms. It's not as easy for me as well. That's why I'm asking. If you'll be willing, only then will I work. Varna, because 10-12 people engaging and submitting, it's a little disappointing for me as a teacher. We'll talk about this more. Just keep this in mind. सोच लो इसके बाद जब आईडी खत्म कर लेंगे तो ऐसे रिवीजन शुरू कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा. If you get time, you will have a long weekend coming soon again. Please in 3 days में ADAS पढ़ना शुरू कर लीजिए आप, ताकि आप इन 3 days में पढ़ोगे. Next 3 days of next week we'll be finishing off IED, so that when I ask you people to write an assessment, objective हो जाए या diagrammatic हो जाए, you should be comfortable with that. Should not be a stress for you. That's my plan. All right. For now, I am posting your attendance question. Please go and mark your attendance. We meet tomorrow and we start IED. Excuse me, ma'am. Anji Arnav. Ma'am, can you tell me about the deleted portion in the foreign exchange rate chapter? Arnav, for foreign exchange, we don't have to do determination of foreign exchange. तो अगर आप अपनी book खोलोगे ना, they'll talk about demand of foreign exchange, they'll talk about supply of foreign exchange, and then they'll have that micro का scissors diagram. All these 3 things are deleted. करना क्या है? Meaning of foreign exchange करना है and types of exchange rate करने हैं. जो हमने fixed, flexible और managed floating करा है, सिर्फ वो, ये 3 करने हैं. Okay, ma'am. Any other question that I can address? All right then, people. Have a nice day, everyone. Sure, ma'am. Good day.